Hello भाई. Today topic Sloan ratio. Sloan ratio क्या है? So basically Sloan ratio identifies for investor identify company earning manipulation. So let's start. Sloan ratio. Sloan ratio. Ratio. Sloan ratio. Number one, Sloan ratio. Investor detect earning manipulation. Earning manipulation. Investor detect earning manipulation. It helps us quality of company earning. Quality of company earning. So इन्वेस्टर को हेल्प करता है स्लोन रेशियो डिटेक्ट अर्निंग मैनिपुलेशन क्वालिटी ऑफ कंपनी अर्निंग कॉन्सेप्ट स्लोन रेशियो 1996 पर प्रोफेसर स्लोन Richard Sloan discovered Sloan ratio in 1996 to identify earning manipulation. Sloan ratio tells us how much of company earning from real cash flow or accounting adjustment. So प्रोफेसर रिचर्ड स्लोन 1996 पर स्लोन रेशियो डिस्कवर किया एंड कंपनी स्लोन रेशियो हेल्प्स हाउ मच ऑफ कंपनी अर्निंग फ्रॉम रियल कैश फ्लो और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट. सो स्लोन रेशियो बार करने के लिए फॉर्मूला ऑफ स्लोन रेशियो. Sloan ratio is equal to net income minus cash flow from operation. Net income minus cash flow from operating divided by total asset. This is the formula. So at the example, net income net income 120 crore, cash flow operating 80 crore, cash flow operating next total asset
500 करोड़। So Sloan ratio formula अब बैठा दो 120 minus cash flow पर 80 divided by total asset 500 करोड़। So 8%. So Sloan ratio, lower the Sloan ratio, better the company. Lower ratio, lower Sloan ratio, better company. Lower Sloan ratio, better company. And higher Sloan ratio, more suspicious. So Sloan ratio interpretation of Sloan ratio. Interpretation of Sloan ratio 0 to 5% strong earning quality. Strong earning quality 5 to 10% moderate accrual. 5 to 10% moderate accrual. Next 10% above higher accrual. सपोज किसी कंपनी ने प्रॉफिट किया 100 करोड़ बट कैश फ्लो रियल कैश फ्लो 50 करोड़। सपोज 100 करोड़ प्रॉफिट एंड 50 करोड़ बट 50 करोड़ 100 करोड़ प्रॉफिट बट 50 करोड़ रियल कैश फ्लो and 50 crore paper profit. So Sloan ratio, lower ratio is better and higher ratio is more suspicious. company earning manipulation करता है।